Some science videos have been uploaded in this YouTube Interesting Maths on special request from my dear students. View them, and if you find it useful, share it with your friends and all others who can be benefited. Let's see the structure of leaf. The leaf is made up of a petiole, that is the leaf stalk. This leaf stalk attaches the leaf to the stem. लीफ स्टॉक जो है लीव्स को स्टेम के साथ जोड़ के रखता है. इस डंडी को कहते हैं लीफ स्टॉक. ये दिस इज द लीफ स्टॉक. ये लीफ, ये जो फ्लैट पार्ट है इसे कहते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना. अब ये जो इट इज नोन एज मिड रिब या मेन वेन. ये जो साइड है, साइड में जा रहे हैं, ये है साइड वेन्स. इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है ये नेटेड, स्मॉल नेटेड वेन्स पूरे लीफ में फैले हुए हैं. यहाँ लीफ के पीछे से भी दिख रहा है ये वेन्स. ये है द टिप ऑफ द लीफ. ये इसको कहते हैं, इस कॉर्नर को कहते हैं एक्सिल. जो एंगल बन रहा है ये स्टेम के साथ स्टॉक जहाँ जॉइन हो रहा है इसको कहते हैं एक्सिल. और इस एक्सिल में कुछ आउटग्रोथ्स हैं. ये जो आउटग्रोथ्स हैं ये या तो एक साइड में होते हैं या दोनों साइड में होते हैं. इसको कहते हैं स्टीप्यूल. यहाँ से या तो ये न्यू लीव्स ग्रो करते हैं या यहीं से फ्लावरिंग बर्ड ग्रो करता है. और इसका काम है लीफ को प्रोटेक्ट करना या बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना. पेटियोल इज द स्टॉक विच कनेक्ट्स द लीफ to the stem. It helps in transporting water and nutrients from the roots to the leaf and food from the leaf to the other parts of the plant. This is the leaf blade. It is flat, broad surface of the leaf which absorbs sunlight and helps the plant to make their food by the process of photosynthesis. This is stipule. It is an outgrowth, typically borne on both the sides, sometimes on just one side of the base of the leaf stalk. The petiole is the small leaf-like structure or a part of leaf part we can say. It protects the next leaf or the bird as it grows in, then falls off after the leaf unfolds. It can be used as climbing tendrils by the climbers, and the spiny stipules can be used to protect the plants from animals. Spiny stipules मतलब ये जब कांटे हो जाते हैं तो एनिमल्स पत्तों को खाने आते हैं, तो ये पत्तों को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. और जो क्लाइंबर्स होते हैं, जिन प्लांट्स के स्टेम सॉफ्ट होते हैं और वो किसी और चीज़ को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं, उनमें ये स्टिप्यूल्स जो हैं वो क्लाइंबर को हेल्प करते हैं टेंड्रिल्स बनकर. ये टेंड्रिल्स बन जाते हैं और क्लाइंबर को हेल्प करते हैं. ये इस तरह से टेंड्रिल्स बन जाते हैं और क्लाइंबर्स फिर इनके हेल्प से किसी चीज़ को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं. An axil is
the angle between the upper side of the leaf and the stem from which it grows. Buds develop in the axil of a leaf. The veins are the dark lines on the surface of a leaf. The largest thick vein in the center of the leaf is called the midrib. This is the midrib. Vein in the center. The smaller thin lines branching off the midrib form the network of veins, as I showed over here. These are the network of the veins. You can see it here also, the network of the veins, very clearly shown. The smaller thin lines branching off the midrib form a network of veins. Veins provide support to the leaf. They help in transportation of water and minerals and food. A leaf has a transparent layer at its top. Under the skin, there are many layers of cells. These cells are tiny bags like structure containing water and living jelly. These cells contain small packets of chlorophyll, that is the green pigment, which helps in absorption of sunlight and help plants to make food. And the lower layer or the lowest layer has small openings called stomata. It helps in exchange of gases like oxygen, carbon dioxide and water vapor. So you can see the front part of the leaf is shiny. It helps in absorption of sunlight. On the underside of the leaf there are small openings which we cannot see with the naked eyes. We have to see through the microscope, and those small openings are called stomata. See, when the stomata is closed, it looks like this, and when the stomata is open, this part is open, and these are the two kidney like cells which helps in opening and closing of the stomata. And the gas exchanges take place in the plant from this opening, and the gases are carbon dioxide, which is taken in for photosynthesis, and oxygen is given out. Some extra water is given out, that is called transpiration, and at night the plants breathe in oxygen just like us. So all these exchange of gases take place in stomata.